at ease. Take the salute position. Attention to the center. Mr. President of the Republic of Azerbaijan, the parade squads of the armed forces are lined up at the military parade dedicated to the 5th anniversary of the victory in the patriotic war. Minister of Defense, Colonel General Zakir Hasanov. Salute, soldiers. Salute, Mr. Commander-in-Chief. Dear military personnel, dear guests, ladies and gentlemen, I would like to congratulate you and the entire Azerbaijani people on the occasion of the 5th anniversary of the glorious victory. I express my thanks to the leaders of brotherly countries who have accepted my invitation. I sincerely welcome their presence here. Today, in our parade, I have my dear brother, the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan. My dear brother, at the Second Karabakh War, since the first hours, he has started to provide his support to Azerbaijan and to the people of Azerbaijan. His political and moral support he has extended to us has elevated us and has brought us additional might. And under the leadership of distinguished President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, Azerbaijan has been receiving a constant support. At war, Azerbaijan was not alone. Turkey is with Azerbaijan. This was what he said, and that was a message to the entire world. And Azerbaijani people will never forget this support. And just 1 year after our glorious victory, the presidents of Turkey and Azerbaijan have signed the Shusha Declaration in the city of Shusha by bringing our relationship to the highest possible level, to the level of alliance. And today, at this military parade, we have the presence of Turkish armed forces, and this is another reflection of our alliance. And several years ago, my dear brother, Recep Tayyip Erdogan, was with us, and today we have other important person, my dear brother, the Prime Minister of brotherly Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, stands with us. And the brotherly Pakistani state has shown the solidarity and support in all 44 days of our war. And today at this parade, we have also Pakistani military personnel that is marching with us at this parade. And Azerbaijan, Turkey, and Pakistan, these three nations, they are showing so there's a solidarity between their armed forces. And I welcome all guests coming from friendly countries. And today, their presence at this event shows our unity and our brotherhood and our friendship in a clearest way. Early 90s, due to this occupational policy of neighboring Armenia, almost 20% of our territory has fallen under occupation. Almost 1 million of Azerbaijani citizens have become refugees and IDPs, and war crimes have been committed against us. The Khojalı genocide was perpetrated, and this has never shattered our will, because Azerbaijan has firmly said we will never
reconcile with occupation. When we have been at peace negotiations, at all times, we have been declared, if there will be no result for peace negotiations, we will liberate our ancestral lands by any means and options. Long years of negotiations have given zero result, and the main goal was that revealing Armenian intention that Armenian armed forces will never withdraw from the occupied lands, that political and economic support that have been extended by some circles. So they had the intention that to detach the ancestral land of Karabakh and attach it to Armenia. Our policy at that time was to fully restore our territorial integrity and sovereignty. And in 2003, when I was elected to the office of the President of the Republic of Azerbaijan, for the first time, I have declared that we will liberate our lands at whatever cost. And we have been working hard each year, each month, national and economic independence. We do not depend on any source. We do not depend on any position. That has gave us also a political independence. We, as a country, we had the independent policy, and this has brought us closer to historic victory. In Azerbaijan, we have fully established political and civil stability. This unity between the citizens of Azerbaijan and between the power and the people, this is decisive factors. We have been upbringing our young generation in the spirit of patriotism. And today, our young people, at this war, they have shown their courage. They have sacrificed their lives to liberate our historical lands. And to be a patriot, it has become a part of their moral qualities. And that was one of the main factors at that war. We have successfully implemented energy and transport projects by providing an irreplaceable support for many nations at the international arena. At the same time, we have been building our army, our armed forces. We have succeeded to create brave and strong armed forces. We have raised their level of combat preparedness. We have provided all military capabilities. And of course, all these factors explain our glorious victory at the war. And when it comes to Armenia, Armenia did not make a good analysis, because after those operations, they have become even more avid. They have started to put new territorial claims to us. They have been threatening us to go for a new war. They have been even saying that we'll go for a new war for the sake of new territories. And they will occupy the entire territory of Azerbaijan. They have been saying that their tanks will roll in the city, in the streets of Baku. And they say that they were drinking tea in the streets of Baku. But in reality, their dreams have become true. We have made their dreams become true, because today their military machines are being demonstrated in our trophy park. And Armenian criminals today, they are in the prisons, and they are in the remand prisons, and they are accounting their stories today in the court. 44 days. 44 days were enough for our military forces. Each day they have been going ahead, no step back, not a single day.
a great professionalism, a valor, the heroic actions. May Allah rest the souls of all our martyrs in peace. We have shown to the entire world that we are a resilient nation and we have strong armed forces. We have demonstrated it in battlefield. Just during 44 days, we have liberated over 300 cities and villages. We have been chasing away our enemies and getting new lines, line by line. And any liberated village and city, the Azerbaijani flag that we have raised there, all of these have been inspiring Azerbaijani people. And finally, on November 8, the insurmountable fortress, the city of Shusha, has been liberated from Armenian occupation. And from 27th of September until the 8th of November, we have been going very successfully, going through ravines, through rivers, and climbing up the high mountains. We have been bringing closer this victory, and this is very symbolic. Just 5 years ago, the liberation of the city of Shusha has completely dispelled the Armenian army, and after all, they have surrendered. And starting from the 9th of November to 10th of November, Armenian leadership has officially signed a capitulation act by tendering a full surrender. And by this way, we have restored the historic justice, international law, and we have brought back our national dignity. Today, Karabakh and Eastern Zangezur are being restored. Today, we are implementing the Great Return program. Schools, hospitals, industrial facilities, energy power plant, water storage facilities, and houses are being constructed. And over 60,000 people today live in the liberated territories. They work there, and they get their education there. And all these historic achievements. So this is a nice occasion to congratulate once again our dearest Azerbaijani people. We have been living these 5 years since our victory, and I am confident that from now on, Azerbaijani people, as the हो रहा है, आप आइन का इस बिल का मुताला कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 18वीं तरमीम और 1973 आइन का कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, उसका तो तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और उसकी मैं क्रेडिट दूंगी। हम सबको हमारे साथ हुकूमत ने साथ दिया, लेकिन उनका पहला मुतालबा यही था कि आप सूबों के टैक्सेशन और डिविजिबल पूल को में लचक दिखाएं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फेडरेशन के पास इस वक्त पैसे कम होते जा रहे हैं। फेडरेशन पर प्रेशर्स बहुत हैं, वो हम जानते हैं प्रेशर्स। तो हमने कहा बाद में आप तजावीज़ फिस्कल प्रेशर्स कम करने की हम बहुत सारी आपको तजावीज़ दे सकते हैं। मैं आपको बग़ैर किसी से चेक किए बता सकती हूँ जी कि आप अभी देख लें कि आपके बजट जो है, बजट की बात हो रही थी, असल इशू पाकिस्तान के वसाइल का है, उनके तकसीम का है और उन पर टैक्सेशन का हक़ कौन रखता है, उनकी नुमाइंदगी कौन करता है। ये बुनियादी इमरानी मुआहदा था जो पीपल्स पार्टी ने तब भी बरकरार रखा, बहाल किया अपना लहू दे के, सूली पर चढ़ के, और फिर कायम है। इसमें कोई चेयरमैन साहब हमारी तरफ से फंडामेंटलिज्म नहीं है, ये हमारा बुनियादी एक ये बिलीफ है, ये तशख़्ख़ुस है पीपल्स पार्टी का कि हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन को बहुत अहम समझते हैं। हमारी वजह से यहाँ खुली डिबेट हो रही है, हमारी वजह से आप तवज्जो देंगे मेरे भाई, दोनों मेरे बलूचिस्तान के दोस्त हैं, आप तवज्जो दें कि आप हमारी वजह से और हुकूमत से हमने इल्तिजा की कि लंबी डिबेट चलाएं, कहीं ऐसा ना लगे, और उनका शायद इंटेंशन भी नहीं था, कहीं ऐसा ना लगे कि
हम बैठ के 4 लोग एक कमरे में कुछ तय कर लें। नहीं, ये पार्लियामान रबर स्टैंप नहीं है। ये इसीलिए 26वीं तरमीम में तो हमने तवील डिस्कशन किया, लेकिन हमारी कोशिश थी। On the 5th anniversary of our Victory Day, I'm very happy to be with you. For his kind invitation, I extend my gratitude to my brother Ilham Aliyev. I bring you the greetings of your brothers and sisters in Turkey. I bring you the sincerest regards of 86 million people. On this proud day of ours, I believe that our brothers and sisters in the Organization of Turkic States are also sharing the same enthusiasm with us. May our victory be blessed. May Allah grant Azerbaijan and the Turkic world many more victories. I thank all the representatives from friendly countries who are with us today, especially my brother, Prime Minister Shahbaz of Pakistan, who shares Azerbaijan's happiness. My brothers and sisters, today we are celebrating the 5th anniversary of a magnificent and tremendous victory that put an end to a 30-year occupation. I once again commemorate with mercy all our martyrs who fell in the homeland war, the brave sons of Azerbaijan. May Allah bless the souls of our martyrs and grant them paradise. One of the symbolic names of Azerbaijani literature, Mehmet Aras, described the Azerbaijani Turks' love for homeland as follows. Today, every moment of ours should say homeland. Our sword, our shield should say homeland. Well, instead of the fallen, the remaining ones should say homeland. Every feeling of our heart, every single emphasis, accent should say homeland. No matter where we are, our time, our place should say homeland. I express my gratitude to our heroic veterans whose hearts always beat for the homeland. And I pray that Allah is pleased with them, and we thank them. I congratulate once again all members of the Azerbaijani armed forces who ended the 30-year occupation with their epic struggle at the cost of their lives. In like manner, I sincerely congratulate my brother Ilham Aliyev, the architect and leader of this great victory, and wish him continued and lasting success. I would like you to know that the liberation of Karabakh is not only a source of pride for Azerbaijan, but also for the entire Turkic world. Every single step taken by the Azerbaijani army on the soil of Karabakh and every single drop of blood shed for independence and honor has been inscribed in gold letters in our shared history as a badge of honor in the history of the Turkic world. Today, Azerbaijan soldiers
stand shoulder to shoulder, side by side with their brothers from Turkey. When we look at our soldiers, we can all see what the motto "Two states, one nation" means. The flag of freedom rising on the blood of our martyrs waves with honor, pride and glory all over Karabakh. As you know, 45 days ago, we bid farewell to a great poet who was originally from Karabakh. Merhum, the late Yavuz Bülent Bakiler, expressed his longing for Karabakh with the following lines. I can enter your soil with flags. I'm longing for Karabakh like lovers. I can die for Karabakh. If everything ends one day without me seeing Karabakh, I don't want bands or big wreaths. I only ask Allah to give my soul some peace. Well, just let a few handful of blessed soil of Karabakh be sprinkled over me. Poets wrote such poems filled with longing for Karabakh for years. Under the resolute, determined leadership of my brother Ilham, the Azerbaijani army liberated Karabakh from occupation and put an end to the fire burning in the hearts of people for 30 years. It's thanks to Allah today, from Lachin to Shusha, from Zangilan to Hankendi, and from Hocalı to Fuzuli, there is peace, there is development, there is prosperity and freedom in every single soil, piece of land of Karabakh. Inshallah, this climate of peace and security will continue to strengthen. My valuable friends, distinguished guests, the Karabakh victory not only ended a great injustice that wounded consciences, but also opened doors to a new era in our region. The homeland war also changed the geopolitical balances in Asia and Europe. We neither hold grudges nor allow the pains of the past to be repeated. Therefore, we consider this victory not as an end, but as a milestone on the road to lasting peace in the Caucasus. We believe that the establishment of peace in the Caucasus will serve the prosperity of the entire region, from Asia to Europe. I would especially like to emphasize one point here. We're very hopeful and optimistic about lasting peace. We appreciate the sincere efforts of my brother Ilham Aliyev for the establishment of lasting peace. We're also happy to see the courageous steps taken by Prime Minister Pashinyan of Armenia. Inshallah, this tremendous victory will result in a lasting agreement that will consolidate peace and tranquility in the region, thanks to the constructive attitude of both leaders. As Turkey, we will continue to do whatever is required of us in this regard. At this point, we take pride in the progress achieved by Azerbaijan, both in its region and beyond.
Our exceptional relations are strengthened every day with concrete and strategic projects. As you will remember, we crowned our cooperation with the Azeri Çırak Güneşli project of the century and the Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline, Şahdeniz and TANAP. So we crowned our cooperation with these projects and further reinforced it with the commissioning of the Iğdır-Nahçıvan natural gas pipeline. We're now striving to take this cooperation further and expand its scope. We hope that the new routes to be established in the Caucasus will increase transportation and energy transmission opportunities. We need to further develop the East-West Middle Corridor crossing the Caspian Sea with investments for the benefit of all our brothers and sisters. I believe that we will take much further steps together with Azerbaijan to use the Baku-Tbilisi-Kars railway line in the most efficient way. Distinguished brothers and sisters, Azerbaijan is making great efforts for the reconstruction of the region, especially Karabakh, the safe return of the people, and the restoration of destroyed cultural and religious heritage. Together with my brother Ilham and my brother Prime Minister Shahbaz Sharif of Pakistan, we visited parts of Karabakh. I personally witnessed the mobilization for development and investment throughout Karabakh after the victory. I saw on-site airports, roads, bridges, tunnels, railways, houses, rising buildings, agricultural and transportation projects. Under the leadership of my brother Ilham, I closely observed what dear Azerbaijan can achieve. Once again, I say, Mashallah, Barakallah. Of course, what we have seen is just the beginning. Inshallah, more will follow. With its magnificent beauty, Karabakh will once again become the shining star of the region. During this process, we will provide all the required support to Azerbaijan. In addition to our bilateral cooperation with Azerbaijan, we also continue our unity and solidarity within the Organization of Turkic States. With the participation of all members of our family council at the highest level, we held our 12th summit in Gebele in October. I'm pleased that the decision I called for at the summit, the declaration of December 15th as World Turkic Language Day, has been enforced by UNESCO. Our solidarity with Azerbaijan will, inshallah, gain even more momentum during Azerbaijan's term presidency of the organization. I wish Azerbaijan every success in all the work to be conducted.
With the unwavering support of Azerbaijan, I hope the position of the Turkish Republic of Northern Cyprus within the Turkic world will be strengthened. May Allah help and protect us. With these thoughts, I once again commemorate with mercy our martyrs who watered the land with their blood in the homeland war and express my gratitude to our veterans. Likewise, I once again remember and commemorate with gratitude all the martyrs of the Caucasian Islamic Army who liberated Bako from occupation in 1918, especially Gazi Namdar Şehidi Ala Enver Pasha and his brother Nuri Killigil Pasha. So I remember and commemorate them once again with gratitude. Taking this opportunity, I sincerely congratulate your 19th November State Flag Day. I greet you all with my most heartfelt feelings. Thank you, and may Allah protect you. Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Muhammad Shahbaz Sharif. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबन जमीआ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम. My dear brother, President Ilham Aliyev, my dear brother, President Recep Tayyip Erdogan, my dear brother Sheikh Hamdan Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, UAE, heroic personnel of the armed forces of Azerbaijan, my Azerbaijani brothers and sisters, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am grateful to my dear brother President Ilham Aliyev for his gracious invitation and the warm hospitality extended to me and my delegation on this joyous occasion. I bring with me the heartfelt greetings of the people of Pakistan who equally share the pride and joy of their Azerbaijani brothers and sisters on this historic day, celebrating the 5th anniversary of the glorious victory in the 44-day patriotic war. Ladies and gentlemen, Pakistan, Azerbaijan and Turkey, three brothers whose hearts beat together, are present here today along with our brothers from UAE, standing shoulder to shoulder, celebrating this momentous occasion. And what a proud and scintillating sight it is right here to witness our valiant armed forces
marching beside their Azerbaijani and Turkish brothers as the skies come alive with the roar of the JF-17 Thunder jets, a resounding symbol of our enduring friendship, which has, alhamdulillah, grown from strength to strength over these years. Ladies and gentlemen, I am also reminded of the Azerbaijani and Turkish military contingents that proudly marched alongside the Pakistani armed forces in Islamabad amid tremendous applause on the 14th of August this year, when we celebrated Marka-e-Haq to commemorate our historic victory in the four-day war with India. I vividly recall memories of my own childhood. Ladies and gentlemen, I recall my good old memories of my childhood when my late father shared stories of the struggle and sacrifice of our forefathers and their conviction and self-belief that led to the creation of Pakistan in 1947. Today, as I witness your radiant faces and shining eyes, those cherished childhood memories are being refreshed in my mind. Ladies and gentlemen, our national poet, Dr. Allama Muhammad Iqbal, a guiding light of our freedom struggle, beautifully expressed in a poetic verse, and I quote, "Ghulami mein na kaam aati hain shamsheerein na tadbीरें, ग़ुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें." Iqbal says, and I translate in English, in bondage, neither swords nor strategies work. They fail, they don't work. But when the fire of conviction awakens, then all chains of bondage are shattered, are cut. This is what Iqbal said decades ago. And these timeless words remind us that freedom is not won by force alone, but it is unwavering belief and commitment that breathes life into such heroic struggles. Ladies and gentlemen, 5 years ago, the courageous sons of Azerbaijan, under the bold and visionary leadership of my dear brother President Ilham Aliyev, rose to respond to the call of history. The world witnessed in awe as Azerbaijan's brave armed forces liberated their ancestral lands of majestic Karabakh. Throughout this entire struggle for liberation, Pakistan stood like a rock with its brotherly country, Azerbaijan, and will stand with our brothers and sisters in Azerbaijan for all time to come. Honorable guests, Azerbaijan's victory in Karabakh was a glorious vindication of a just and a fair cause, a beacon of hope for all nations around the globe, striving for sovereignty and self-determination, including the brave and resilient people of Gaza and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. This year, the entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the four-day war with India in May this year. Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, Pakistan's highly professional armed forces delivered
a bloody nose to our enemy with a precise and highly effective military punch that stunned the enemy into shock and disbelief. Our ever vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. Indeed, Pakistan, like our Azerbaijani and Turkish brothers, seeks peace, but let there be no doubt at all that no one can ever be allowed to challenge our sovereignty or undermine our territorial integrity. Ladies and gentlemen, today as we celebrate the past, we also look to the future with great hopes and aspirations. It is heartening to see the return of displaced families to their homes in Karabakh. My dear brother, Mr. President, it is also a great testament to your personal strong commitment to the welfare and progress of the people of Azerbaijan. The astounding speed of reconstruction under your leadership, Mr. President, in Shusha, the jewel of Karabakh, Khan Kendi, Fuzuli, Lachin, and all across the liberated territories of Karabakh is absolutely phenomenal and beyond imagination. Also, one of the most successful models of development is found in present-day Turkey, whose architect is none other than my dear brother President Recep Tayyip Erdogan, who is also here as one of our very honorable guests to witness this great ceremony. I must express my sincere admiration for his visionary leadership that has transformed Turkey into a modern, progressive, strategic and economic world power. Ladies and gentlemen, true victories lies not on the battlefield alone, but in building bridges of peace and understanding. My dear brother President Ilham Aliyev, I deeply admire your sagacious leadership that guided Azerbaijan on the difficult journey leading to peace with dignity and mutual respect between Azerbaijan and Armenia. Having secured a resounding military victory in Karabakh, Mr. President, you have now won peace through your outstanding, skillful diplomacy. Here, I must acknowledge and appreciate President Donald Trump for his exemplary leadership that culminated in the success of these peace efforts. It was President Trump's bold and decisive leadership that brought about the ceasefire between Pakistan and India, restoring peace in South Asia, averting a major war, and saving millions of people. Ladies and gentlemen, our common resolve for peace has most recently been tested in the case of Afghanistan. I am grateful to my dear brother President Recep Tayyip Erdogan for his invaluable contribution in facilitating the peace efforts between Pakistan and Afghanistan, along with the state of Qatar. This is a true reflection of the strong and time-tested fraternal ties between our countries that stand together through thick and thin. Ladies and gentlemen, while we celebrate victory today, we must also remember the fallen. May Allah rest the souls of the martyrs of this glorious struggle of Azerbaijan, who laid their life to reclaim their ancestral land with their blood and invaluable sacrifices. Their courage, fortitude, and sacrifice wrote an immortal chapter in annals of history
that will continue to inspire generations for all time to come. And today, as the beautiful Khari Bulbul flowers bloom across the liberated lands of Karabakh, nurtured by the soil and enriched with the blood and sacrifice of those brave sons and daughters, they bring the glad tidings of peace and hope. May Allah Almighty grant our great nations the strength to continue marching resolutely towards a promising future of progress and prosperity. Pakistan, Azerbaijan Dosti Zindabad. Pakistan, Azerbaijan, Turkey, UAE Dosti Paindabad. Thank you all. Khuda Hafiz. बाकू में आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। यौम फ़तह पर आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़रबाईजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का दिफा किया। इल्हाम अलियेव की क़यादत में आज़रबाईजान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान एक ख़ानदान की मानंद है। तकरीब में शिरकत मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है Stay bright in the sun. ऐसे न्यू Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Royal Air Purifier with advanced features. वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के खिताब ताहयात होंगे। वजीर आजम भी फील्ड मार्शल का खिताब वापस नहीं ले सकेंगे। रिवर्स करने का इख्तियार पार्लियामान के पास होगा। मुसल्लह अफवाज में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने नुमाया खद्दोखाल ईवान में पेश कर दिए। आईनी बेंच का तजुर्बा कामयाब होने के बाद वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किए जाएंगे। वजीर कानून का अपोजिशन जमातों पर कानून साजी का हिस्सा बनने पर जोर। चेयरमैन ने मुसव्वदा दोनों ऐवानों की कायमा कमेटियों के सपुर्द करके मुश्तरका इजलास बुला लिया। जब बना था इत्तेफाक राय से बना था। अगर हम उसके अंदर अमेंडमेंट ऐसी लेके आएंगे जहाँ इत्तेफाक राय नहीं है और ये आइन हमारा जो गैर मुत्तफिका हो जाएगा, इसके असरात पूरे पाकिस्तान पर होंगे। हमें जो भी अमेंडमेंट हो कंसेंसस होना चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। और जिस तरह से आपने शुरू करवाया ये हमें अभी हमारे सामने रख रहे हैं, अभी ये कोई बात तरीका कार है। इत्तफाक राय से तरमीम ना की गई तो आइन मुतनाज़ हो जाएगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का कानून साजी का हिस्सा ना बनने का ऐलान। अवाम पाकिस्तान को गैर मुताल्लिक किया जा रहा है। अवाम ऐसे आइन को फाड़ देंगे। इतनी जल्दी क्या है? अल्लामा नासिर अब्बास का इत्तफाक राय के बगैर कोई भी इकदाम ना उठाने का मशवरा। तरमीम पर तमाम तबका हाय फ़िक्र की राय लेने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर की तमाम अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर मुसव्वदे पर बहस की तजवीज़। कह रहे हैं कि सबको पार्टिसिपेट करने दें, हर इंडिविजुअल को।
जितने इंडिविजुअल हैं उनको करने दें, क्योंकि कमेटी में तो इन्होंने बुलडोज करना है। आप एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें, वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें। सबको इजहार राय का मौका मिलेगा। नायब वजीर आजम और कायदे ऐवान इसहाक डार ने पूरा ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। पार्लिमान रबर स्टैंप नहीं, 27वीं तरमीम से 18वीं तरमीम और 73 के आइन का दिफा होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान हुकूमत के दिफा में सामने आ गई। वफाक को आमदन बढ़ाने के दीगर जराए इस्तेमाल करने का मशवरा। तो इस हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को, और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफा। काबीना में छोटे सूबों की नुमाइंदगी और मुशीरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। 27वीं तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। MKM की तजवीज़ पर बल्दियाती हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की शिक पर मुशावरत की जाएगी। 18वीं तरमीम समेत जिन अमूर पर इत्तफाक ना हो सका उन्हें 28वीं तरमीम के लिए छोड़ दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करने का खैर मकदम। मुल्क के वसीतर मफाद और वफाक और सूबों के रिश्ते की मजबूती के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। बाकू में मौजूद वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी बल्दियाती कवानीन से मुतालिक शिक पर वफाकी हुकूमत से खफा। तरमीम की हिमायत वापस लेने की धमकी। वफाकी हुकूमत की जियाले अरकान को तयशुदा नुकात ही तरमीम में शामिल रखने की यकीन दहानी। NFC अवार्ड से मुतालिक कोई बहस नहीं हो रही, सेनेटर रुबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से PTI की सेनेटर्स की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। बाकू में अज़रबैजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब। मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड का मुजाहरा। सदर इल्हाम अलियव का तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर इजहार मुसर्रत। तकरीब से खिताब में कहा, तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हर मौके पर अज़रबैजान का साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफगान तालिबान का सरहद पार दहशतगर्दी बंद कराने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार। सालिसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पाकिस्तानी टीम की वापसी। जब तक अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती सीज़ फायर बरकरार है। खिलाफ वर्जी हुई तो मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ने दो टोक पैगाम दे दिया। पाक अफगान कशीदगी के बायस तोरखम बॉर्डर 28वें रोज भी बंद। सिर्फ अफगान पनाह गुज़ीनों को वतन वापस जाने की इजाज़त है। गुज़श्ता रोज 2200 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। खैबर बाड़ा में हुजरे के अंदर हैंड ग्रेनेड फटने से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुन मौर का। मेहमान टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। हारिस रऊफ और अबरार अहमद की टीम में वापसी।
हांगकांग में जारी सुपर सक्सेस के फुल एक्शन मुकाबले, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। यूएई ने भारत को बासानी शिकस्त दे दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स पार्टी के सीसी अरकान के एजाज में दोहराना, मुल्क की सलामती, वफाकी वहदत और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई रोकने की कोशिशें, हुकूमत ने 3 MPO 16 MPO दफा 144 में तरमीम का फैसला कर लिया। ATC इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम पेशी पर अलीमा खान और उस्मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची समेत मुल्क भर के लिए सितंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती, सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। जमात इस्लामी की दरखास्त नेपरा को भेजने की हिदायत। हर पार्कर के इलाके डानो धांधल में दरख्त से लटकी 3 नौजवानों की फंदा लगी लाशें मिली हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शनाख्त धनजी, गौतम और भागचंद कोल्ही के नामों से हुई। फैसलाबाद के सरगोदा रोड में अचानक गोली चल जाने से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक हो गया। गार्ड वॉशरूम गया जहां असला गिरने से गोली चल गई, पुलिस का दावा। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाइयां, गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 7 मुसाफिर गिरफ्तार, 2 बेलारूस जबकि 5 इटली जाना चाहते थे। भारतीय फौज भी इंतहा पसंद हिंदुओं के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने लगी। भारतीय आर्मी चीफ का आश्रम का दौरा, वर्दी में मंदिर का दौरा, इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के फरोग का पैगाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ठंड बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत लेहा और स्कर्दू में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मरी, पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 5 और इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दौरे बांग्लादेश के लिए कौमी हॉकी टीम लाहौर से ढाका पहुंच गई। सीरीज 13 से 16 नवंबर तक खेली जाएगी। फातेह टीम को FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में रसाई मिलेगी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया। बंद है मैं कदों के दरवाजे, हम तो बस यूं ही चल निकलते। और लफ्जों में बगावत, लहजे में दर्द, उर्दू के मुनफरिद शायर जॉन एलिया की बरसी पर मद्दाह यादों में गुम हो गए। रोज धूप से होते हैं स्पॉट्स और डलनेस। हम धूप से बचते हैं ऐसे, पर बचना चाहिए ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट UV डुओ सनस्क्रीन, जस्ट 2 फिंगर्स और सन डैमेज से नो वरी। SPF 30 धूप से 97% तक बचाए, विटामिन C सीरम बनाए अंदर से ब्राइट। ये है नॉन स्टिकी विद नो वाइट कास्ट। स्टे ब्राइट इन द सन ऐसे। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइट UV डुओ सनस्क्रीन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली, खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ की मोबाइल ऐप। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डॉन न्यूज़। आज मैं स्कूल यही पहन के जाऊंगा। मेरा कराटे कंपटीशन है। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्ट्रॉन्ग हो। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देती हूँ नाश्ते में ग्लूको, जिसमें है गंदम और मक्खन की ग़िज़ायत और कैल्शियम जो बनाए तुम्हें स्ट्रॉन्ग।
और इस तरह हर सुबह मैं इसको जीत के लिए तैयार करती हूँ। पीक फ्रेम्स ग्लूको, हर सुबह स्ट्रॉन्ग। तरक्की के सफर में एक और तारीख रकम। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट हुकूमत सिंध का तरक्की की जानिब एक और कदम। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट येलो लाइन BRT के तहत शहर कायद के दिल में एक नई पहचान। मेन कोरंगी रोड से मुत्तसिल ताज हैदर ब्रिज अब आवाम के लिए खोल दिया गया है। ये सिर्फ एक ब्रिज की तामीर नहीं, ये अवामी अज़्म, सहूलत, जदीदियत और बेहतर राबतों का नया रास्ता है। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट, हुकूमत सिंध। वाह, पहाड़ों में चपली कबाब। आलिया, पहाड़ दिल की सुनते, बोल के तो देखो। अरे किल्लू, मसूड़ों में दर्द है कोई हल? कोलगेट हर्बल नेचुरल है। लौंग, नीम, यूकलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए। कोलगेट हर्बल, मजबूत दांत, सेहतमंद मसूड़े नेचुरली। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और लाइफस्टाइल पे अप टू 90% ऑफ और साथ में फ्री शिपिंग, 1 अरब के डिस्काउंट्स और 11 रुपए डील्स। तो 10 नवंबर रात 8 बजे से शॉप करो दराज 11-11 से, द बिग बॉस ऑफ 11-11। एक्टिव लाइफ के साथ दिन रात KNN's डिलाइन। जैज़ कैश ऐप से गेम अप करो, आसान से चैलेंजेस पूरे करके पाओ बेशुमार रिवॉर्ड्स। तो फिर जैज़ कैश रिवॉर्ड हब है ना। इस उम्र में बच्चों को एक्टिव रहने के लिए बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, जिसमें शामिल है प्रोबायोटिक्स और खास न्यूट्रिएंट्स बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। नेस्ले लैक्टो ग्रो, ग्रो एक्टिव विद एक्टिव ग्रो। जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 जोंग मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। आज पाकिस्तान में हर 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन की कमी है। इसलिए जरूरी है नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस। जैज़ कैश ऐप से गेम अप करो, आसान से चैलेंजेस पूरे करके पाओ बेशुमार रिवॉर्ड्स। तो फिर जैज़ कैश रिवॉर्ड हब है ना। पानी गर्म हो गया, चल नेस्कैफे बना दे। ये तो रोज बनाते हैं, आज तुम बना लो। एक मग में 1 सैशे डलता है। एक मग में 1 सैशे डलता है। पहले गर्म पानी, फिर दूध और चीनी। गुड यार। हाँ, काफी इजी था। बाद में मग धोना भी सिखाएंगे। पहले साबुन फिर स्पंज। मोर देन ऑर्डिनरी पैकेट शेयरिंग चाहिए तो आम नेटवर्क से ना लड़ते रहो। रॉक्स पे आओ and share your packet with 4 friends, family or foes. Because it's more than a network. Download the Rocks app now. नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। KNN's introducing Fire Bolts. Fire Bolts. Safe and healthy chicken. KNN's. Royal Air Purifier. Introducing 30 watts digital inverter air purifier with advanced features. अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों?
सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। बस एक साशे नेस्कैफे में ऐड करो गर्म पानी, फिर दूध और चीनी और बन गई 30 रुपए में ग्रेट टेस्टिंग कॉफी। नेस्कैफे, बनाओ अपनी दुनिया। मोर देन ऑर्डिनरी पैकेज शेयरिंग चाहिए तो आम नेटवर्क से ना लड़ते रहो। रॉक्स पे आओ and share your packet with 4 friends, family or foes. Because it's more than a network. Download the Rocks app now. इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। Sobroso's all Arabian filet nuggets, definitely Arabian. नेस्ले लैक्टो ग्रो विद एक्टिव ग्रो, बच्चों की ग्रोइंग बोन्स के लिए। जोंग के मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से सब कुछ मिले सिर्फ 500 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। ग्लूको, जिसमें है गंदम और मक्खन की ग़िज़ायत और कैल्शियम जो बनाए तुम्हें स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान और अज़रबैजान एक जान दो कालिब है। हमेशा हर महज पर अज़रबैजान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में अज़रबैजान के यौम फतह पर तकरीब से खिताब। 27वीं आईनी तरमीम पर बहस कराई जा रही है। अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। पीपी सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट इजलास से इज़हार ख्याल। जाली मैंडेट पर बनी हुकूमत आयन में तरमीम कैसे कर सकती है? सेनेटर फैसल जावेद का ऐवान बाला से खिताब के दौरान सवाल। वजीराबाद में NH-66 पर PTI बायकॉट के बायस मुस्लिम लीग नून ने बिला मुकाबला मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ को कामयाब करार दे दिया गया। और खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पुलिस को मनशियात फरोशी के खिलाफ सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी गई। वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला, गहराई से दाग निकाले। मैं तुम्हें देती हूँ नाश्ते में ग्लूको, जिसमें है गंदम और मक्खन की ग़िज़ायत और कैल्शियम जो बनाए तुम्हें स्ट्रॉन्ग। और इस तरह हर सुबह मैं इसको जीत के लिए तैयार करती हूँ। Peak Greens Gluco, हर सुबह strong. So crunchy, fully infused with flavor for the first time in Pakistan.